I'm here representing you today from the startup industry, but also as Vygr, being part of young media that wants to understand what is it that goes in the mind of a VC when you look at a deal? What is it that goes in their minds when they start coming together to fund a dream, which is now called a startup? I'm here with Tushar Kansal, the founder and CEO of Consultancy Ventures. He is also an angel investor himself and has a network of over 21 years in business that he's gathered. He has funded over $50 million of investments, over 500 plus companies. And here we are talking to him, asking him a few tough and a few soft questions. What he also tells me is, Tushar, कि ज्यादा VCs हंसते नहीं हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा हंस नहीं सकते. ऐसा क्यों? वो अपने रूम में हंसते हैं और बहुत हंसते हैं. I don't like the thought of that, but ठीक है, हम पे हंसते हैं यार, आपस में हंसते हैं. But VCs, I have a couple of friends in this space and they're fairly chill people. ये tough exterior क्यों maintain करना पड़ता है? Because आप किसी को कोई आपसे पैसे मांगे और आप उसके लिए मना कर दो, वो आप हंस के नहीं कर सकते. तो आप हंस के करोगे, you'll be seen as selfish, mean, and a person who's not bothered and vain. या अच्छा तुम एक उसने position of power कोशिश भी में नहीं हो. करी जानने की कि मेरी क्या सिचुएशन थी और सीधा मना कर दिया. तो they have to do it with a straight face. Tell me your journey thus far, and 21 years in the business is a lot, and you have a network of what 1,000 investors and VCs. ये journey के बारे में मुझे बताइए, इंडिया का और उसके स्टार्टअप इकोसिस्टम के पूरे ट्रांजिशन के बारे में बताइए. Sure. I started out by working in Deloitte and Tush, and there I handled private equity assignments, and I saw that what is it actually to invest your money and the kind of gains you can make out of it. You know, matter of fact, अगर आप income tax देखें तो 30-40% है इंडिया में, और अगर globally like UK में 45% है, US में 40% है, लेकिन अगर आप कैपिटल गेन्स टैक्स देखें तो 0% से 15% है. सो अगर आप अपना मनी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मूव करते हो ग्लोबली, चाहे वो दुबई हो या सिंगापुर हो या इंडिया हो या यूएस हो या यूके हो, तो उसमें आपको हमेशा कम टैक्सेशन लगता है, बिकॉज द रिच ऑफ द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस मोड टू अर्न मनी. सो एवरी कंट्री वांट्स कि जो रिच लोग हैं वो पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट लगाए, तो उसमें टैक्सेशन कम किया हुआ है. सो अगर वहाँ पे टैक्सेशन कम है तो आप इनकम साइड में आप कोई भी चीज क्यों करोगे? True. आप प्रॉफिट एंड लॉस साइड, आप बैलेंस शीट साइड में ही करोगे. True. उस पे एक्सपेंसेस दिखाओगे, उस पे बाकी चीजें दिखाओगे, and then you sort of bring that overall taxable income down. Absolutely. So I realized the value of that, and after being in Brand Capital, which is Times of India's venture arm, then I learned how to do investments, term sheets and shareholders agreements, and then there was a corporate journey, MTS. I raised $3 billion for them. Finally, जब मैंने Consultancy Ventures start किया 2016 में, there were only 400 startups registered with the Startup India. Today they are 1 lakh. Yes, that's the number we've grown at. So maybe I was like at the inflection point. Yeah. So that is the journey which I have seen in the last 8 years. How has the kind of startups changed? और ये मेरा ख्याल है थोड़ा cyclical होता है. इसमें एक वक्त पे शायद थोड़े टेक और बाकी तरह की चीजें फंड हो रही होती हैं. Now I think there is a wave of ed tech, pet tech, these kind of startups coming in. Give me the last 3-4 years for these. So basically, जब China story play out हुई, तो Tiger Global and Alibaba and SoftBank, इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे कंज्यूमर स्टोरीज, कंज्यूमर टेक कंपनीज कैसे ग्रो हुई, एंड द ग्रोथ वाज लाइक लिटरली थ्रू द रूफ. सो दे सेड दैट if China did that from 2009 to 2014, which was like 500% annual growth, so same cheese will happen in India. So they wanted to be early movers here. So Tiger Global was the first one, and all these they started investing money. Flipkart में लगाया उन्होंने, और Myntra में लगाया, e-commerce में लगाया. तो कुछ सेक्टर्स ऐसे निकल के आए जिसमें उन्होंने लगाया. तो उसके अंदर e-commerce एक था, और उस टाइम की रिटेल टेक कंपनीज थी, Zomato, Swiggy, उसमें. तो
जो पैसा था वो वहां से लगना शुरू हुआ. Right. और इंडियन वीसीज जो थे दे टुक अ क्यू फ्रॉम द फॉरेन वीसीज. तो वो सेक्टर्स हॉट हो गए बिकॉज एवरीबॉडी वाज पुटिंग मनी इन देयर. तो उसके बाद कोविड के बाद स्पेसिफिकली fintech startups, because everybody started transacting using the mobile phone, and by chance गवर्नमेंट ने जो आधार और यूपीआई का जो स्टैक बनाया, इंडिया स्टैक, तो वो सेक्टर बहुत हॉट हो गया. और उसके साथ साथ ये कंपनीज मैच्योर हो गई, फ्लिपकार्ट एंड ये सारी आईपीओ जाने लग गई, सम ऑफ देम, सो और दे केम थ्रू दैट इनके स्पेस. फाउंडर्स जो इनकी मैनेजमेंट्स थी जिनको ईसॉप्स मिले थे, उन्होंने आगे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कंपनीज खोलनी शुरू कर दी. तो वो हेल्थ टेक, फिनटेक, एआई, मशीन लर्निंग, एग्रीटेक भी टू एन एक्सटेंट, तो ये सेक्टर्स बहुत हॉट हो गए. और टेक वाज द बाइंडिंग कंपोनेंट फॉर all of them because tech enabled fast expansion, बिल्कुल you can say exponential growth. आप this or that नहीं कर सकते आज की तारीख में. You can't have just a manufacturing setup or just a service setup and not be tech enabled alongside. Is that because the smartphone, I mean, Jio came in 2016, and today 50 crore households are connected through Wi-Fi, and there are 80 crore mobiles which have a smartphone kind of features. So Wi-Fi internet is available with 80 crore, and so all of these people are using mobiles 8 to 10 hours per day because they are hooked on to the mobile. Yeah. So if you are ignoring the mobile as a platform to connect with people and grow your business, then you are not going to make it. So that is the tech component, which is the mobile, and somehow you have to link your business through the mobile, which means whether be it through the app or some other way. So something or the other needs to have a tech overlap on it. उसके अलावा आप function नहीं कर सकते. But I think what you're also coming to is a very important... Because your competitors are doing it. Your competitors. I mean, आपके competitor आपके data को crunch कर रहा है AI use करके, और आपको targeted ads दिखा रहा है, targeted data दिखा रहा है, और आप नहीं दिखा रहे, तो you're always playing a losing game. So that is the thing. What you also are coming to is a very important distinction between, और ये बहुत लोगों को confusion है, a startup and a business. जो एक business venture है, that I think is something which is the traditional form. एक uniforms manufacturing की company हो गई, या एक beauty products की company हो गई, beauty tech और beauty products जो manufacture कर रहे हैं, या जिस let's say कोई HR services की company हो गई या whatever, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है वर्सेस अ स्टार्टअप. आप अपने पर्सपेक्टिव से मुझे इसका डिफरेंस बताएंगे. अगर आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट सपोज लैक्मे के ब्रांड का बेच रहे हो जी, और मे बी यू आर सेलिंग इट थ्रू अ शॉप, इट्स अ ट्रेडिशनल बिजनेस. आप कितनी शॉप्स लगा लोगे? इंडिया में रेंटल्स का जो प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में देयर आर 50 मॉल्स, 50, जिसके अंदर आप अपना ब्रांड बना सकते हो, और उन सबके रेंट्स दे आर वेरी हाई. सो बाकी जो मॉल्स हैं वो चली नहीं, या फिर वो हाई रेंटल्स की वजह से बंद हो गई. लेकिन अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपकी एक 50 की लिस्ट है. तो एंड दैट एक्सपेंशन, इफ यू आर ट्राइंग टू डू अ ऑफलाइन एक्सपेंशन, ब्रिक एंड मोर्टार एक्सपेंशन, इट कॉस्ट्स अ लॉट. तो उसमें प्राइवेट इक्विटी फंड डालेगा पैसा, लेकिन वेंचर कैपिटल फंड नहीं डालेगा, बिकॉज वो इतना मनी वो आज डाल दे मनी, लेकिन फॉलो ऑन राउंड नहीं होगा, तो आपको शॉप छोड़नी पड़ेगी, वो ब्रांड बंद हो जाएगा. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ. लेकिन एक स्टार्टअप जो है, जैसे मामा अर्थ है, अब उन्होंने कहा वो D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर में बेचेंगे, अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचेंगे, बैक एंड पे वेयर हाउसेज रखेंगे, और जो डिलीवरी होगी दैट विल बी थ्रू एस्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स. सो दे क्रिएटेड अ इकोसिस्टम, लाइक अ डुअल हाइब्रिड मोड, जहां फिजिकल ऑन ग्राउंड भी है और ऑनलाइन, और डिलीवरी थ्रू द ऐप हो रही है. और ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स, तो उनको अपनी लॉजिस्टिक्स आर्म्स भी लगाने की जरूरत नहीं है. एंड वेयर हाउसिंग दे कैन ओपन एनीवेयर एट लो रेंट, आप कहीं पे भी खोल लो. लेकिन मॉल्स वाला इश्यू तो नहीं है. तो दैट इज अ स्टार्ट. वो डिपेंडेंसी निकल गई वहां से. वो है. और उसके अंदर आप जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इतनी हाई रखो कि आपकी वैल्यूएशंस दे ग्रो फास्ट, एंड यू आर एबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ मनी, and finally you can give them an exit through the IPO जो वो करना चाहते हैं.
Right. So that is a startup, basically, which understands the ecosystem in a way that they can expand very fast using technology, even if using large amounts of money, but create value for all stakeholders. Is the funding winter a truth? ये I think is something which we are sick of hearing. Funding winter चल रहा है, funding winter चल रहा है. ये आया कैसे funding winter firstly, or is it the truth firstly? So finance is actually driven by economics, Yeah. and the economics of the world runs from the US, United States, for the pure reason that 63% of global transactions they happen in dollar. The dollar is a reserve currency. So the actions of the US Federal Reserve and the US government. Federal Reserve is the central bank of the US, which prints the currency. Yeah. उनके एक्शंस का जो रेमिफिकेशंस है वो पूरी दुनिया में, वो अगर अपने डॉलर्स को ज़्यादा प्रिंट करेंगे, वो डॉलर सारी जगह पे घूम जाएगा, इजी मनी अवेलेबल होगा, Right. और वो मनी एसेट्स में इन्वेस्ट होगा, सब एसेट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसको एसेट बबल्स कहते हैं. एसेट बबल्स बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, Right. कमोडिटीज, सबके पैसे बढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी, जी. और वो जो मनी है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, तो महंगाई हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोविड के टाइम पे उन्होंने इतना मनी बांटा कि हाउस होल्ड्स को दे दो, कॉर्पोरेट्स को दे दो, सबके पास इतना मनी अवेलेबल था, the same money was chasing a small supply of products and services. तो उनकी वैल्यू बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई. उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन इन द यूएस इज गोइंग थ्रू द रूफ. It is 7 to 10%. Yes. Whereas usually it is 2 to 3%. Yes. So उसको कंट्रोल करने के लिए the Federal Reserve has to increase interest rates. और जब वो interest rates increase करते हैं तो supply of money कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. वो उसका effect पूरे ग्लोब में पड़ता है because India is a part of emerging markets. तो यहाँ पे पैसा रिस्की माना जाता है to invest in India. तो वो मनी जब अवेलेबिलिटी कम होगी तो वेंचर कैपिटल में भी कम होगी, तो उस वजह से फंडिंग विंटर आया और वही चल रहा है. VCs are investing. Startups are not getting funded. ये पैसा जा कहाँ रहा है? पार्क है साइड में. अगर आप देखो एलिवेशन कैपिटल 850 मिलियन लास्ट ईयर एंड में रेज किया था, अभी 700 मिलियन से ज्यादा पड़ा हुआ है. लेकिन फंडिंग विंटर सबको बोल तो रहे हैं, लेकिन द थिंग इज they are waiting for the juicy deals. कि डील बहुत अच्छी मिले, अच्छी वैल्यूएशन पे मिले, because down rounds are happening. जो सीरीज A, B और C में है उसमें डाउन राउंड्स हो रहे हैं. डाउन राउंड्स क्या होता है? मतलब लास्ट राउंड की जो वैल्यूएशन मिली थी उससे कम, उससे नीचे डाउन राउंड. तो मनी बहुत है साइडलाइंस में, बट इट इज वेटिंग फॉर द राइट वैल्यूएशन to get invested because valuations have cracked by around 30%. Wow, that's a lot. Yeah, from the peak. Now, since you come to this point, एक वक्त पे ऐसा होता था, and that's something which I think the reason why a lot of the young founders have come into the play, because they're like, यार कई बार तो founder के चेहरा देखकर पैसा मिल जाता है, right? Seed का idea सुन के पैसा मिल जाता है, pre-seed मिल जाता है. अब वो नहीं हो रहा, or those deals are happening very very few and far between. How has that changed over the last couple of years? क्या actually founder की शक्ल देखकर पैसा मिलता था और अब नहीं है, or is that something which was a mirage? नहीं, ऐसा नहीं है. जो promising founder है, if उसने आपको first interaction में ही 40 minutes के अंदर सारे आपके questions answer कर दिए, and he is so clear-headed. And you can see the passion with which he wants to solve a particular problem. So there were VCs who were cutting fast checks, especially if the founder had already done it before. तो उसमें तो कोई issue ही नहीं था. तो मतलब if they've succeeded once, maybe in the past, sold something and then coming in, that's what you're talking about. Yeah. Look at a lot of these companies which the founders, they had already got an exit. Correct. Or they had done a startup before. Correct. So easy, I mean, the checks were quite easy. Now, I mean, the thing is that, first of all, you have to save money for investing in follow-on rounds of your investing companies.
कि अगर उसका अगला राउंड नहीं हो तो वो क्या करेगा, आप नई इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे? तो वो चीज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। एग्जिस्टिंग के लिए सबने पार्क किया हुआ है। आई नो दिस गाय, आई मीन ही इज 94 करोड़ फंड, और अभी 100 मिलियन का उन्होंने रेज कर लिया है already। पैसा सारा 94 का मेजर जो मनी है वो जो 6 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ, वो फॉलो ऑन का पार्क किया हुआ है। वो इसलिए बिकॉज वो कंपनीज डूबेंगी तो आई मीन थिंग इज कि नई इन्वेस्टमेंट करके क्या नई करो? इन्वेस्टमेंट करके क्या करो? तो वो चक्कर हो रहा है, और जो फ्रेश राउंड रेज करने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज इन द यूएस। तो ये चल रहा है प्रॉब्लम। Coming to India's political scenario, and we have national elections coming in next year. Typically, इस time के आसपास भी चीजें थोड़ी uncertain हो जाती हैं, and while we're already experiencing the funding winter, now political sort of, it's like a double whammy that's perhaps coming to us in 23-24. Tell me about this. Well, what happens in the election time is that जो stock markets होती हैं वो they come a bit down, जी, because जो FII money होता है they always feel कि अभी थोड़ा time wait करते हैं, इसमें फिर बाद में invest करेंगे once the picture is clear. correct. Because having a stable government at the center, continuation of policies, and especially this government has done so much for startups and investments that they would investors would want that this government continues. तो उसके लिए थोड़ा हिकअप आएगा मार्केट में, बट frankly people used to talk about, you are from the banking field, like people used to talk about decoupling, जी, that foreign markets, developed markets and emerging stock markets, they should be decoupled. वहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और यहाँ का इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की डायनामिक्स बहुत अलग है। अब जो कोविड में चाइना, जापान, यूरोप और यूएस, उन्होंने जो पैसा बांटा वो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी बोला था कि आप बांटो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा नहीं बांटा, उन्होंने फूड बांटा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से 80 करोड़ इंडियंस को फूड मिलता है, तो दे डिड द राइट थिंग, उससे इन्फ्लेशन आज इंडिया में कंट्रोल्ड है, दैट इज व्हाई द ग्रोथ जीडीपी वी आर द लार्जेस्ट। तो यहाँ का डायनामिक्स अलग है। अब यूएस में स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, इफ यू लीव द टॉप 25 स्टॉक्स, टॉप 25 छोड़ दो, तो स्टॉक मार्केट गिरी हुई। इंडिया की नहीं, आज भी 63,000 हाईएस्ट पे चल रही है, तो डीकपल तो हो गया। तो लेकिन स्टॉक जो इलेक्शन है वो इतना सेंसिटिव चीज है। अब जैसे कर्नाटका द गवर्नमेंट लॉस्ट, सो अभी तक मार्केट्स हैव डाइजेस्टेड इट बिकॉज इट वाज अ स्टेट इलेक्शन, it was not a Lok Sabha election. But that bearing is always there कि Yeah, यार they would स्टेट like पे to wait कंट्रोल and जाने watch. लगी है, That तो also हो state सकता है like नेशनल Karnataka. लेवल। I mean, I mean Karnataka and Maharashtra, I mean, they are the engines of in Gujarat. Yeah. So मतलब वो तो it will have some bearing. I'm definitely sure that election से पहले कुछ wait and watch mood आएगा markets में। आपने 21 साल निकाले हैं इस स्पेस में। Throw some light on the demographic of the founders that you see, the age, the gender split, और कई बार as a woman founder मुझे भी कई बार पूछा जाता है कि is it tougher for you to perhaps raise funds or something like that? I personally don't think so. What is your thought? So demographics, there are two types of founders. One जो college टाइम से ही सोचते हैं that they have to create an entrepreneurship career. जी, तो वो तो बहुत राइज हुआ। मतलब मैं जिस कॉलेज में, मेरे को ऐसे ऐसे कॉलेजेस के कॉल आते हैं that everyone is talking about entrepreneurship development cell, and everybody is seeing what is happening at Shark Tank, and they know the words monetization, and they know the words as in ROI, traction, yes. revenue growth, all of those, हाँ, जो एक वक्त पे I think non-financial background से आने वाले founders को थोड़ा टफ होता था पता करना, टर्म शीट, पिच डेक, ये सारी चीजें more or less उनके पास होती हैं, and I think they also have an understanding of whom to approach for what. Yeah, I mean definitely democratization has happened in this space. Women founders का मैं आपको बताऊं कि India is not a bad place for women founders. मतलब अगर आप to give you an example,
12.5% of our pilots are women. This is the highest if you compare it with Europe, Japan, or US. They are less than 12.5%. The US is 7.5%. So this shows that women empowerment में कोई problem नहीं है. That you're willing to put your lives and your money in the hands of a woman. Yeah, उसमें अगर कोई वो problem plane नहीं. उड़ा सकती है तो फिर तो startup तो उड़ा ही सकती है. Right. लेकिन I'm the husband of a working professional woman. Like my wife was senior vice president with Access Capital, head of capital markets, North region. मैंने लाइफ में देखा है उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन प्रोफेशनल को, दे आर फॉर रियल. मतलब you are in a meeting, there are 12 men and 1 woman. It is so uncomfortable because some of them will actually either stare at you or they'll make you feel uncomfortable. And if you're driving and the driver is constantly looking at you from the mirror, it is not right. I mean, it is. I have spent 17 years in this space and I understand. कई वक्त I hate to say this, but बहुत वक्त लग जाता है to. I mean, the initial first 10 minutes is spent in establishing the point that I'm a woman, but I can talk sense. So, or I mean, I don't want to get outlandish over here, but here, look here, मैं यहाँ हूँ, talk to me because. And I think your wife perhaps has similar experiences, and so do other women. Mean, it's not easy. I mean, and especially also because of the fact that they are supposed to look after the house more than the men. Yeah. Because men will say, "मैं तो office चला गया था, मैं late आया." बहुत change हुआ है, but still that onus is still there. The man is still. The leadership is still there. Okay. So it's like double work. So that problem is there, but things have changed. I mean, in the startup field, I know I have seen women founders do exceptionally well. And I don't think from a funding perspective, any investor will say that because she's a woman, but rest of the things are good, I won't invest. I don't think that is the case. In fact, one of the investors, they invested in Shiro's. Yeah. And Shiro's was a company who was set up to promote women at the workplace. Correct. And their thesis wasn't to invest in such kind of company, but they convinced their LPs that we want to invest in this company because it's a unique idea for promoting women at the workplace. So I mean, and I really believe that this will grow even bigger. I agree with you. And this is something which, like I said, I have also experienced. I do interact with some of them. Have become friends also on the VC and the private equity side. And I actually ended up asking one of these VC friends of mine in jest. I said, "Does it matter if the founder is a man or a woman?" He said, "Does it matter if you deliver ROI to me or not?" I said, "Yeah, I have to deliver ROI." He said, "Then it's okay. How do I care about the gender?" It was a very simple one-line answer, which kind of, I think, even if there were cobwebs in my head, those were cleared out. कि boss, मुझे return of my investment चाहिए. आप क्या जेंडर से आते हो, क्या बैकग्राउंड से आते हो, क्या स्टेट रीजन से आते हो, उससे मुझे कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता. अभी I was having a drink at the Lalit Connaught Place CP, and the hostesses, they were all this third gender. So the Lalit management is keeping them, and they did their job very well. Yeah. Initially, I was taken aback because all of them were from transgender, but later on, I said, okay, then why not? Why should they be only begging at the red lights and at the signal? So somewhere, I think that tokenism is now translating into actual action on ground through different things. It is. And at one point of time, I would say, and I know a lot of it is media fueled tokenism, but if it is doing thoda sa bhi agar difference create kar rahi hai, so I think we're still in a positive space. Yeah, good. I mean, Indra Nui, I mean, she said in, I think, one of the videos I saw that it is double work. Yeah. On one hand, your kids are there and they are growing up, and on the other hand, your work is there. I'm sure given the family support, it is fun.
I remember her saying it, since you quote Indra Nooyi, I remember her saying in one of the interviews saying, when I come home, the crown comes off. Yeah, that's right. Tell me about Consultancy Ventures. And I have, in my past and current conversations with you, I've understood that you don't just, I mean, it's not like मैंने आपको एक email डाली, आपने उसको reject कर दिया और मेरा दरवाजा आपके साथ बंद हो गया. You're in a space where you don't just see these ideas and evaluate them, but you also bring them to a point where they're market ready. Tell me about that. So what happens is that companies come to us and we establish whether we would be able to fund them or not, because we can't have an open thesis. So we have a closed thesis, Yeah. wherein we know exactly what we can do and what we can't do. Can you define this thesis for me? Thesis, Because I think a lot of startups don't understand. So which sector you'll invest, at what stage of the business you'll invest. ये defined होता है. Defined होता है. It's like a mandate sort of that gets decided. Basis that thesis, you have raised money from your LPs, अच्छा. limited partners. अच्छा. तो limited partner को आपने बोला है कि मैं health tech और fintech में ही डालूंगा, उसमें भी मैं consumer facing companies में डालूंगा, उसमें भी मैं technology led में ही डालूंगा, उसमें भी मैं India focus में ही डालूंगा, अच्छा. उसमें मैं सीरीज ए में ही डालूंगा या प्री सीरीज ए में ही डालूंगा. Oh, it's that tight. Yes, it is established. So what happens is 90% of the people who are approaching you, they are not reading and coming. They are not looking at your website and coming. That is the problem. So they हम just सारे स्प्रे में लगे हुए हैं कि चलो भाई ठीक है, हमने 400 लोगों को लिंक्डइन पे हमने सबको मेल डाल दी है. Yeah, so that doesn't work. And what happens is analysts are trained to identify companies who fall in the thesis, study them a bit, make an investment a doc, and then present it to the committee. So naturally, वो जैसे तो this doesn't fall, this doesn't fall, this doesn't fall. 90% they reject. Right. And then they study the other ones they discuss. They form a document and they present it every Monday to the management. And there are so many of them, so I think every analyst is able to present 5 of them in a week. Achha. And that also for 5 minutes each. Oh. So that's how strong then my pitch as a startup needs to be to the analyst, so that the analyst gathers those quick 10 bullet points to present to the management. It's a literal yes, no decision for them. Yes. And secondly, the companies which come to us, we don't fund, but we tell them, listen, we really like your idea. And we think we can get you funded from our 450 foreign investor connects or the Indian investor connects. So we sign up with them for 3 months. We first make them investment ready, which means like apart from the pitch deck, business plan, financial model, valuation, then helping them on unit economics, how to present unit economics, MIS, what are the term sheet clauses, exit clauses, what are the due diligence documents they need to prepare. A lot of these term startups, I think, come to know very late in their journey. Yeah, but we actually, for first month, we are preparing them only. And then we get them on calls with the investors and then take it forward from there. And then there is a mentoring angle to it also because, I'll give you an example. There's a fantastic company I'm dealing with nowadays who are my clients. They already have got 2 term sheets. So I told them in one of the term sheets there was a intellectual property mentioned. This guy didn't know intellectual property. I said, man, you have 15 years of experience in L&T and you don't know what intellectual property is. So one has to never assume that anything is common sense. Achha. You have to explain them from the basics, right? Because these things later on matter a lot. For the investor, intellectual property matters a lot. Of course. So it's what they're betting on to start off with. Yeah. So that's what we do. Tell me, what is the most startups would then in that case be afraid to approach you? बहुत पैसा लग जाएगा. So what is the model there of charging them? Well, we are charging an amount in the initial thing for preparing them, and then later on we are charging a success fee. But we are not into the equity model like an accelerator, because that model, although we are kind of that model only, but we are not taking equity. Achha, you're not taking it. Because
Okay, let me put it in short. We believe in paid equity. Mm. Money dalo and take equity, not free equity. Because I don't think a lot of players in the market are justifying free equity all the You time. invest yourself as well. Yeah, I do. I've invested in six now. Tell me some of the successful transactions that you've done in the past, and if you can name them. I've done an investment in Animoi Technologies. They have created four kind of robots, and because Supreme Court of India has banned manual scavenging Mm. of municipal sewer lines, so their robotic scavenger, they have a robo for scavenging. It's seeing very good traction. So that is one company. Second, I'm invested in Indus B2C Global. It's a hair extensions export company, and they are doing good work by exporting these hair extensions to Africa, Russia, and China. And so basically, all these African origin women, their hair are very tangy. Mm. So they really love Indian hair Mm. because Indians really take good care of their hair, with oil and everything. Yeah. So they put these hair extensions all the time, and they sources from India, and India has a export of around $1 billion of hair every year. So the two that you've named don't really seem to have industry overlap, so to speak. So it's literally pan industry for you, or are you still having the segment? No, this was here one was because of some reference. This person was very close who had recommended, so the trust factor was there. See, I tell you now, I think 60% of any investment is the trust factor. So I'm going to be asking you a few questions that some of our viewers have sent across to us, and I, of course, travel from state to state, tier two, tier three towns and cities, and there are a lot of these queries that come to us. A lot of them, perhaps, are too afraid to tap into this network as well. So maybe a couple of them for you, and if you could throw some light. Sure. ये term sheet क्या होती है? So whatever mode and structure of the investment which the investor is making, he encapsulates it in the form of I think it's like 12 to 20 pages, and it gives you like how much amount he'll be investing, uh, mode of investment, as in will he be straight away taking your shares against a valuation, or will he be taking some instrument like there are preference shares, debentures, warrants. So what is the structure and the vehicle, and thirdly, what are the protections the investor is having. For example, they will have certain covenants which protect the investor in the future events. Sure. So they encapsulate all that, and then there are right of first refusal, tag along clause, drag along clause, anti dilution clause, and there are exit options. So the investor, main problem in India has been since the time venture capital picked up pace, exits. You look at the number of venture capital funds who have completed their 10-year tenure, and they are sitting with unsold equity. It is a तो मतलब problem. कहीं एक इन्वेस्ट किया था लेट्स से 2013 या 14 में और आज तक उसी इन्वेस्टमेंट पे बैठे हाँ, मतलब 20 में किया था, 2 में एग्जिट मिली, 18 रख के बैठे। ओके ये ऐसे फंड्स की पूरी ग्रेवयार्ड है। मतलब एग्जिट इज अ मेन प्रॉब्लम बिकॉज कितनी आईपीओज आते हैं, आप बताओ जो आईपीओज आए हैं, those I think also are 10 running से 60-70% of their initial listing prices. हाँ, बट कितने आए हैं? 15 आए हैं, 10 आए हैं, मतलब और और इन्वेस्टमेंट्स अब धीरे धीरे जाके सेबी ओपन आउट हुआ है कि यस प्लीज स्टार्ट ब्रिंगिंग इन, बट अदरवाइज ये जो नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, स्पेशली द टेक बिजनेसेस, हैव रिसेंटली गॉट द स्पॉटलाइट फ्रॉम द मार्केट या रेगुलेटर्स. मतलब लॉस मेकिंग बिजनेसेस को अलाउड नहीं था इंडिया में आईपीओ करना। करेक्ट 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए। करेक्ट. अच्छा, ये कंपनीज जो है ये सारी लॉस मेकिंग होती हैं बिकॉज दे आर They're playing on revenues, they're playing on transaction values. कस्टमर लॉक इन कर रखे हैं, मोनेटाइज का तरीका ढूंढ रहे हैं कि ऐसे भी करो मोनेटाइज, वैसे भी करो, और ऐसे ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर दो। तो अब सेबी ने अलाउ कर दिया, तो जो सबसे पॉपुलर कंज्यूमर फेसिंग थे उन सब को आईपीओ हो गया बिकॉज पीपल न्यू देम, सो पीपल पुट मनी। दूसरी क्या है कि सेबी ने एक क्लॉज लगा रखा था कि
जो भी आईपीओ आएगा 50% रिटेल कोटा होगा, यानी जो लोग 1-1 लाख रुपए डालते हैं, अगर वो आप नहीं बेच पाए 50% ऑफ योर आईपीओ, तो आईपीओ डिवॉल्व हो जाता है, तो वो बैठ जाता है, तो मार्केट में इतना नाम खराब हो जाता है कंपनी का। ईमार एमजीएफ आज तक नहीं कर पाई दोबारा आईपीओ, ये एक बार डिवॉल्व हो गया। अब उसको गवर्नमेंट को बोला तो गवर्नमेंट ने चेंज करवाया, तो सेबी ने अब उसको 15% कर दिया, 10 to 15%। तो जो मार्केट मेकिंग हो रही है वो इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं लार्जली, विच इज अ बेटर वे टू डू इट, बिकॉज तो अच्छा, तीसरी चीज ये जिस वैल्यूएशन पे आईपीओस लेके आए, तो टर्म शीट जो आप बता रहे थे, मतलब उसमें एग्जिट ऑप्शंस भी, और उसमें डिफरेंट मोडालिटीज, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कितनी सीट रखेंगे इन्वेस्टर, और ऑब्जर्वर पोजीशन लेगा या एक्चुअल डायरेक्टरशिप लेगा या फिर एक नॉमिनी डायरेक्टर रखेगा, वो भी स्पेसिफाई करके। तो वो टर्म शीट सारी चीजें एनकैप्सुलेट करती है, और उसके अंदर कुछ ऐसे भी क्लॉजेस होते हैं कि ऑल्दो वी आर नॉट हैविंग अ मेजॉरिटी इक्विटी, बट इन अगर ये एक्शंस होंगे कंपनी में तो आपको हमारा अप्रूवल चाहिए। जैसे कि आप यू आर सेलिंग अ बिग एसेट, और यू आर रिक्रूटिंग अ वेरी कॉस्टली सीएक्सओ, और यू आर क्रिएटिंग अ न्यू सब्सिडरी, or you are entering new countries, you are opening office in new countries, तो आप हमसे you will take our approval। ये टर्म शीट के बेसिस के ऊपर आई थिंक वी वर टॉकिंग अर्लियर अबाउट अ कॉन्फर्मेशन बायस और अबाउट अ ट्रस्ट थिंग, तो शायद एक कोई लीड करता है और बाकी उसको फॉलो करते हैं, ये फंडा थोड़ा समझाइए। मतलब जैसे आईपीओ में मार्केट मेकिंग होती है कि आपको आपका जो आईपी शेयर्स हैं वो मैक्सिमम हैंड्स में रहने चाहिए जी, और मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में रहने चाहिए, राइट, जिनके पास स्टेइंग कैपेसिटी हो कि वो उसको रख के बैठे, तो वो अपने साथ साथ आपका भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। नहीं तो अगर आपका शेयर्स वीक हैंड्स में होगा तो वो बेचते चले जाएंगे, आपका शेयर गिरता चला जाएगा। बट यू वांट इट इन द हैंड्स ऑफ गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, एसबीआई, you want it in the hands तो of the so-called best, empowered investor community, LIC। तो उसी तरह से प्राइवेट मार्केट्स में यू वांट योर शेयर्स कि मैं अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें 3-4 बड़े बड़े लोग बैठे हो, ताकि फ्यूचर राउंड में भी वो कुछ डालें। ऐसा ना हो कि मैं ढूंढता ही जा रहा हूँ इन्वेस्टर को, बिकॉज अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो फाउंडर आपके पास आके बैठ जाएगा नेक्स्ट राउंड में, कहेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट मिला, मेरे से नहीं होता, फिर आप क्या करोगे? Because you've already invested, then the onus is on you to find the next guy for भाई it. नहीं तो कंपनी कर दो बंद। तो इस वजह से क्या होता है कि सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि सब मिलके डालो, तो वो कहते हैं अच्छा फोन आया है आज, सिक्वा वाले का फोन आया है, ये एक डील चल रही है, इसमें इस वैल्यूएशन पे हम सिक्वा कह रहा है मैं भी जा रहा हूँ, तो ही हैज हिज स्किन इन द गेम। तो सिक्वा भी जा रहा है, सिक्वा के साथ एलिवेशन भी जा रहा है, सब अपना थोड़ा थोड़ा लगा दो, तो वो कंफर्मेशन बायस हो जाता है। उसमें फिर कोई ये नहीं पूछता कि भाई किस वैल्यूएशन पे जा रहे हो, क्या वैल्यूएशन थी, ज्यादा ड्यू डिलिजेंस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ने कर रखी है। अब वो सिस्टमा फंड है मेरे एक्स एम्प्लॉयर का सिंगापुर में, उनका तो थीसिस में ही लिखा हुआ है कि हम लीड नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी और इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें ही साथ में डालेंगे, किसी इन्वेस्टमेंट में खुद नहीं डालेंगे। अच्छा, तो दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, इट्स काइंड ऑफ डी-रिस्किंग। Tell me, as Consultancy Ventures and as you individually, मुझे कोई एक journey बताइए, which I think one of our viewers wanted to know, that when a mentor comes in, what is the stage that they perhaps start off and where do they lead? इसकी थोड़ी startup journey बताइए। अगर आपको सेक्टर के डायनामिक्स ही नहीं पता होंगे, जैसे आपको पता नहीं कि रिटेल सेक्टर में 45 डेज की पेमेंट एक्चुअल में एग्रीमेंट्स में होती है इंडिया में, लेकिन एक्चुअल जो पेमेंट्स आती है फ्रॉम बिग प्लेयर्स, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज। अगर आपको ये फैक्ट ही नहीं पता होगा और आप अज्यूम कर रहे हो कि मेरी पेमेंट 30 to 45 डेज में आ जाएगी और आपने एक स्टार्टअप शुरू कर दी, तो आपको कल को इट विल बिकम अ कंपनी ब्रेकर डिसीजन फॉर यू। लेकिन एक मेंटर आपने रखा हुआ है जिसको आपने कुछ इक्विटी दे रखी है, you have taken him on a board, और वो रिटेल सेक्टर में 20 साल रह चुका है, जिसको पता है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना होता है, वेयर हाउस की अगर लेना है तो कहाँ पे लेना चाहिए लोकेशन के हिसाब से, उसका कितना किराया जेन्युइन बनता है, तो आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स नहीं करोगे, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स नहीं करोगे। और दूसरा ये है कि स्टार्टअप चलाने में पर्सन वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड ही फील्स कि आई एम जस्ट स्टेयरिंग एट एन एबिस,
बिकॉज वो प्लान्स मुझे ही बनाने हैं, वो मुझे ही विजन देना है, टीम को मुझे ही मोटिवेट करना है. तो मतलब इट्स अ I'm nodding my थैंकलेस. head vigorously right now because I know how much that resonates with me. सो सो उस टाइम में एक मेंटर आपको मिला हुआ है, आप रोज सुबह फोन करके सर, और वो आपको मोटिवेट कर दे कि यार तेरे बढ़िया चल रहा है, कोई नहीं, तू कर. तो It's a trusted friend who you can perhaps talk to, because again in the founder community I've heard that it's a very lonely space. So you're saying that trusted, also a knowledgeable friend, not just trusted friend, but also a knowledgeable friend. knowledgeable friend, somebody who's uh, it's best if that person has a skin in the game also. Oh, also a little bit invested in अगर you. आपने, हाँ, मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप ले लो अगर, नथिंग लाइक इट. और ऐसे ना कॉर्पोरेट्स में बहुत लोग हैं जिन्होंने 15-20 साल लगा दिए, and they feel unconnected, disconnected with the real college life, and so they want to give back also, and पैसा भी कमा चुके हैं. उन लोगों को बहुत they turn out to be very good mentors. Do you do that matching? I can do that. I mean, if I some founder I believe in, I can do that. Absolutely. It's not a difficult thing for me. Just one call I'll make, and I can connect with the best kind of people. Fourth question I had, what are the kind of fields, what are the kind of startups that are now getting into the flavor? अब किस चीज की साइकिल है? अभी तो सैम ऑल्टमन, ओपन एआई का चैट जीपीटी जब से आया है, तो हर किसी को लग रहा है कि कंटेंट राइटिंग खत्म हो जाएगी, अडोब फोटोशॉप खत्म हो जाएगी, जितना भी ऑटो मेलिंग का काम है, और जो इनिशियल फनल वर्क होता है मार्केटिंग का, जिसमें स्टैंडर्ड रिप्लाईज जाने होते हैं एट ईच स्टेज, वो सारा चैट जीपीटी से ही वर्क करेगा. और मतलब आई थिंक इट्स द फ्लेवर ऑफ द सीजन इज एआई. AI. एंड रोबोटिक्स में आई बिलीव अ लॉट, लेकिन इंडिया रोबोटिक्स के लिए एक्चुअली इज अ रॉन्ग प्लेस टू बी, because for the simple reason that our population is huge, and nobody, I mean, there is no economics of replacing a person with a robot, Right. unless it is for scavenging work, Hmm. which is really a man can't do, should not do. You would ideally want labor-oriented, Yes, manpower-oriented. yes, I mean that's true. Yeah, spaces. you have to build companies with a lot of who can utilize manpower more smartly, and even if they are manpower driven, but अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रोबो से रिप्लेस करना चाहोगे, it will really won't work. But health tech and fintech because of the India stack, it's really going awesome. Health tech is going awesome because we consume a lot of wheat and rice. So diabetes, I mean, more than 10 crore Indians have diabetes, and so the diabetes causes a number of health problems. So the health tech scene will remain strong. There is a large problem, hence there is a scope for large number Large of number of solutions. solutions. I mean, every fourth startup I see is a health tech, and they're doing awesome work. This startup had come from Kerala. They had created a new diagnostics product, and then somehow I lost touch of that guy, very smart guy, doctor. And 4 days back, I saw on the Economic Times he got a presidential award. And I was like, oh God, this guy, it's really nice product he had made, and I'd spoken with him for 2-3 months, and he got a presidential award for that. So it was really nice. I mean, I really called him up, I congratulated him. So that is happening, and fintech is there. EdTech, EdTech काफी खराब भी हुआ है because of the existing players. EdTech का प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें देयर इज अ फैमिलीज आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम लाइक एंट्रेंस कोचिंग, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके लिए पीपल आर नॉट विलिंग टू पे एनीथिंग. सो पीपल हैव बीन ट्राइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक psychologists for class 6, 7th, 8th and 9th, like this startup had come. Parents are not willing to pay. कि वो बच्चे के लिए psychologist के लिए मैं नहीं पे करता. So that is there, and तो edtech के अंदर this thing. Now it's a niche play. It's a niche play. I mean, कुछ चीजों के लिए it's very good, बाकी it's a grey. And वैसे भी देखो Coursera,
An uh, academy, uh, Vedantu, Vedantu, and Byju's, of course. edX, and Mm. इतना कंटेंट इतना डेमोक्रेटाइज हो गया है, मतलब इतना इजीली अवेलेबल है. Now, You why can would do you any pay? course anytime, video based course at whatever price. Mm. मतलब सेम चीज आपको 100 रुपए की मिल जाएगी, सेम चीज आपको 2 लाख की मिल जाएगी, Mm. मतलब फ्री भी मिल जाएगी. Mm. तो वो एडटेक का है, और यही सेक्टर्स हैं जो. My last question to you, coming from one of our viewers, is how has the government played a role so far as the empowerment of this space is concerned, both from the startups as well as from the VC perspective? It's played a huge role. I mean, as I told you, 400 startups थी जब मैं आया था, जब गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था. तो आई रियली बिलीव्ड इन इट 2016 में, एंड लोगों को कुछ नहीं पता था, और उस टाइम पे 400 स्टार्टअप से रजिस्टर किया था. आज 1 लाख है. जी. इन्वेस्ट इंडिया की अगर आप बात करो, इन्वेस्ट इंडिया गवर्नमेंट जो आप देखोगे, लिंक्डइन पे आप जाके चेक करना, इन्वेस्ट इंडिया सारे टॉप कॉलेजेस के लोग उन्होंने रखे हुए हैं, ऑल विद द सैलरी कट, एंड दे आर जस्ट वर्किंग बिकॉज दे बिलीव इन द इंडियन स्टोरी. उसमें वॉटन है, उसमें आप जस्ट हैव अ लुक ऑन लिंक्डइन. थर्ड, जो इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब्स खोली हैं फॉर द मशीन लेवल ट्रेनिंग्स. उसके बाद जो हर कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल खुली है. I have done more than 300 webinars, talks, and events with such colleges plus corporate bodies, and और उसके अंदर जो जोश है, जो entrepreneurs को ये लगता है कि हमारा जॉब करने का मन नहीं था, now we have an option. It is a big thing. I mean, and the FDI in India, foreign direct investment, in last year was $82 billion, and this is like huge. And this year also likely to be huge. Of course, election वाला थोड़ा issue आ सकता है, but I mean VC funding also, like I mean it has been picking up, and money sitting on the sidelines and getting invested slowly. And I think on all accounts, it's a place everybody looks up to. कि यार, I was in IIT Delhi event, Shark Tank event, तो एक पीछे बैठा था मैं, तो the student came from me, sir आपसे बात करनी है, like this way students come to you and they want to talk. So मैंने कहा हाँ बता. तो when nobody was sitting there, he came privately. He said मैं लखनऊ गया था अपने घर, और मेरे पास एक आइडिया था स्टार्टअप का, और मैंने मदर को बताया कि मैं ये खोलना चाहता हूँ. तो अगले दिन ना हमारे घर में 50-50 लाख के 3 चेक आ गए. तो वो चेक सर मेरे पास पड़े हैं, वो फोन करे जा रहे हैं, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर, इक्विटी में कन्वर्ट कर. तो मैं करूं या नहीं करूं, मतलब अभी करूं या बाद में करूं. तो उसने कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया था, उसको सिर्फ एक आइडिया था उसके पास. तो ये लेवल है आजकल लोगों का कि मतलब, हाँ, बट वो अभी यूएस के लेवल पे तो नहीं है. जैसे स्विट्जरलैंड में अभी एक इवेंट हुआ था, तो स्विस गवर्नमेंट ने 10 मिनट्स दिए थे यूनिवर्सिटी में फॉर द स्टार्टअप्स टू पिच, और 10 मिनट्स के बाद 15 में से 3 स्टार्टअप चूज किए थे, और तीनों को 4-4 करोड़ की ग्रांट्स थी. ग्रांट्स, नॉट इवन फंडिंग. 10 मिनट्स पिचिंग के बाद. सेम फॉर वाई कॉम्बिनेटर. आप पिच करते हो, यू आर गिवन 5 मिनट्स. आफ्टर 5 मिनट्स जो वो फाउंडर्स होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स के पीछे पड़े, चेक चेक चेक, डोंट वेस्ट आवर टाइम. मतलब इट्स द अदर वे अराउंड. मतलब पीपल कट चेक्स लाइक काट दो भाई. अच्छा. तो वो लेवल अभी नहीं है इंडिया का. अभी भी फाउंडर इन्वेस्टर को चेस कर रहा है, इन्वेस्टर फाउंडर को बहुत कम केसेस में चेस कर रहा है, प्रीमियम डील्स में. वो अभी भी नहीं है यहाँ पे, बट क्या पता. I'm sure you guys will lead that change for us, and maybe startups like us, businesses like us, will help you catalyze that change. Definitely. Tushar, it was absolutely fun talking to you. Thank you so much for responding to all of our questions with such openness and such candid conversations. While of course I'm sure that you've heard us and you've gathered some of your thoughts, you've learned some from this conversation as well, I hope. Tushar and his firm, and of course his large network of VCs as well as individual investors, is helping people like you and me to actually elevate our game to the point where even if we are not market ready today, we have
to become market ready tomorrow, and they get us from point A to point B. They want to support us, contrary to what perhaps some of us believe कि ये पैसा लेकर बैठे हैं और इन्हें हमारी मदद नहीं करनी. It is not like that. They only want to fuel the right kind of people, and it is a tough job that they're facing. I'm finding a lot of compassion for them in my head today. I hope you do too. Thank you for watching.